Hello dear students, once again welcome back to you all. Myself Ambuliraj. Today we are going to see part 2nd of class 8 science microorganisms friend of food. Here in this video we will just see the basic differentiation between these two questions, either how we can tell that whether they are useful for us or microorganisms are harmful for us. So first we are going to see the necessary things or the things which are useful for us by the help of microorganisms, right? So first the thing I am going to tell you that microorganisms are very useful. How? I am going to tell you certain examples, certain things that we have to remember in regarding with microorganisms. First, during the formation of curd, cake, bread, you might had wine, etc. Even during these things formation, we have to add microorganisms, right? That I will tell you later. So first we will see why I am going to write these all things. तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं कैसे ये यूजफुल है हमारे लिए या कैसे इन चीजों में वो हेल्प करते हैं. So first thing, they are helpful in formation of curd. How? Actually you might have seen one thing is that guys, जब भी हमें कार्ड का फॉर्मेशन करना रहता है हम लोग दो प्रक्रिया या दो प्रोसेस फॉलो करते हैं. फर्स्ट थिंग दैट वी यूज टू डू इज दैट वी ऑलवेज गो एंड आस्क फॉर सर्टेन इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्ड आल्सो. व्हाई? यू माइट हैव सीन दिस थिंग गाइस. हम लोगों ने देखा है कि हमारे घरों में जब भी हमें कार्ड या हमें दही की फॉर्मेशन करनी रहती है तो हम लोग क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं से थोड़ा सा जोरन, जिसे क्या हम लोग बोलते हैं कि दूध का फटा हुआ उसे हम लोग लेकर आते हैं. एक्चुअली क्यों करते हैं आपको पता ही है. Actually guys, even a small amount of curd also contains one type of microorganism. That microorganism belongs to bacteria kingdom, which is also known as Lactobacillus bacteria. And because of this Lactobacillus bacteria, whenever we add even a small amount of curd to the whole beaker of containing milk, the whole beaker gets turned into curd. Yes guys, I am telling you very essential thing that we all are seeing in our nature, in our family, in our surroundings. So चलो guys देखते हैं सबसे पहले कि how they help in the formation of curd. So I told you guys, even a small amount of curd also contains one bacteria which is known as Lactobacillus. And because of this Lactobacillus bacteria, whenever we add even a small or few drops of curd in a whole beaker of containing, suppose that I am having one beaker of 10 liter and even I am just adding 2 or 3 drops of curd, you will see that whole 10 liter milk gets converted into curd. The reason behind that is that Lactobacillus bacteria breed very fastly. Even whenever we will leave it just for 12 hours, on the next morning we will see that oh my god, our total beaker contains curd. Yes guys, ये आपको हम लोग घर पे देखते हैं, इसमें जाते हैं जानने की गाइस कोई जरूरत नहीं. तो इतना जानो कि हुए जो है हमें कार्ड के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है. तो पहला स्पेशलिटी या हम लोग यूजफुलनेस बोल सकते हैं कि दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्ड. नेक्स्ट थिंग गाइस, हाउ दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ केक, ब्रेड एक्सेट्रा. तो चलो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि एक्चुअली वो ब्रेड के फॉर्मेशन या केक के फॉर्मेशन में कैसे यूजफुल होता है. So guys, here in this tube we will see another microorganism which is yeast. Y-E-A-S-T. You might have heard this word when we were discussing in part 1 about the different types or different characteristics of microorganisms. There I told you the different types. Either it can be bacteria, our fungus, either it can be algae. I told you so many things when we were discussing about पार्ट 1. सो गाइस देखें कि ये जो ईस्ट होता है ये कैसे हमारा एसेंशियल होता है किसी भी केक या ब्रेड के फॉर्मेशन में. तो चलो स्टार्ट करते हैं गाइस. देखो आप लोगों ने एक प्रोसेस तो हमारे घर में देखा होगा कि व्हेनेवर वी गो फॉर मेकिंग ब्रेड और केक, फर्स्ट आई विल टेल यू अबाउट ब्रेड, दैट द केक फॉर्मेशन इज आल्सो सिमिलर विद द ईस्ट फॉर्मेशन. तो भाई देखिए आप लोगों ने क्या सुना है कि अगर तुम बहुत केक खाओगे तो मोटे हो जाओगे. ये आप लोग अपने घर पे सुनते हैं कि मुझे बताइए कि बहुत तुम केक खाता है ये तुम मोटा हो जाएगा, बहुत तुम ब्रेड खाते हो मोटे हो जाओगे. ये आपने सुना है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज कार्बोहाइड्रेट इज मोर अमाउंट इज प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर फूड ग्रेडिएंट. Because of that only most of the people are saying that whenever you will eat too much amount of bread you will get too much fatter. Yes guys, ये reality है. चलो हम लोग बात करते हैं how they are actually formed. I told you is suppose that whenever we have to prepare
bread. Suppose that what are the process involved in the formation of bread? The first thing that we all do is that we make a dough of what? A dough of normal flour. You might have seen this all things that. So first we do what? We make a dough. Then what we do? After making this dough, we add certain few amount of yeast in that particular dough, and we leave it for few minutes or few hours. And after leaving it for few hours, when we come back and see the cake, or whenever we come back and see the beaker, we find that, oh my god, the whole beaker got transformed into yeast. One major thing I told you, yeast also reproduces so fastly, and even when they reproduces and whenever they respire, no, during the respiration process, they also release कार्बन डाइऑक्साइड, एंड बिकॉज ऑफ दैट कार्बन डाइऑक्साइड यू माइट हैव सीन, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग किसी भी, आप लोगों ने पावरोटी का नाम सुना है या हम आप लोगों ने सुना, जब भी हम लोग पावरोटी को खाने जाते हैं देखते हैं उसके अंदर क्या क्या रहता है, स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर, यानी हम लोग देखते हैं होल 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 कैटल, या हम लोग कह सकते हैं होल होल कुछ रहता है लेवल। एक्चुअली वो क्या होता है कि जब वे लोग क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते जाते हैं, और जैसे ही वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, वो जितना भी अमाउंट का कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कलेक्ट होते जाता है हमारा इस बीकर में, एंड बिकॉज ऑफ दैट गाइस ये हमारा फैलते जाता है, इसका जो एयर स्पेस रहता है वो बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है, जब तक कि वो पूरी तरह से हमें फाइनली ब्रेड का फॉर्मेशन ना हो जाए गाइस। तो सो गाइस यही जो प्रोसेस है, यही हमारा केक के साथ और कार्ड के साथ, दोनों के साथ सिमिलर प्रोसेस जो इन्वॉल्व होता है, और सॉरी गाइस केक और ब्रेड के साथ, और यही प्रोसेस जो है हमारा वहां पे ईस्ट के लेवल होने के कारण हमें ये रिजल्टेड वैल्यू मिल पाता है। So now guys we are going to see how they are essential in the formation of wine, or we can say beer. So guys आप लोगों ने wine का so many names are there, you can say alcohol, no problem, wine, or even you can see, sorry you can tell what, even anybody you can tell. So I am using your wine, you can also use your alcohol, no problem. So we are going to see how they are essential in the formation of wine. Actually guys, you whenever you will reach in class 10, you will see certain more terms. You will see there what do you mean by vinegar, what do you mean by acetic acid, how these two terms are correlated with each other, or how these two terms are different from each other. Actually let me tell you that whenever we are going to make wine, actually there we use one type of microorganism. Even that particular microorganism which we use in the formation of wine is already available in our surrounding. So guys यहाँ पे हम लोग डिटेल स्ट्रक्चर से जान रहे हैं रिगार्डिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ वाइन। Actually I told you wine can be another term as alcohol, any term you can use. So here we are going to see how actually alcohol is formed. Alcohol is formed. Actually during the time of alcohol we used one, I told you one microorganism which we already discussed, that yeast. Yeast is also essential during the formation of अल्कोहल, बट यू माइट बी गेटिंग वंडरिंग, ओ कैसे बनता है भाई, कुछ तो बता दो। चलो स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं हाउ एक्चुअली अल्कोहल इज फॉर्म। एक्चुअली अल्कोहल बनाना बहुत ही आसान है गाइस, लेकिन ट्राई मत करना क्योंकि हमारे लिए काफी हार्मफुल होता है, आप लोग सभी जानते हैं। सीक्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स टू हेल्प ऑल दोस थिंग्स व्हिच आर रिलेटेड टू bad for our health are termed as injurious by the government, but leave it guys, we have to see only the things of regarding to our study guys, हमें ये ट्राई नहीं करना, अगर आप ट्राई करिएगा तो आपके लिए काफी खराब होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं, how actually alcohol is formed. During the time of the formation of alcohol, suppose that I'm having one beaker, what are the process that we have to involve during the formation of the alcohol? So guys first we have to take, even I told you one major thing here, what I told you here, alcohol, acetic acid, vinegar. I told you how these terms are correlated and how these terms are differentiated from each other or different from each other, that we will see. So I am telling you the formation of alcohol. सबसे पहले क्या guys करना है कि एक बीकर में हमें suppose that what we have to do, we have to make a solution of what, two things that we have to add over here. First one sugar and then water. एंड इवन वन मेजर थिंग दैट आपको याद रखना है कि शुगर का हमेशा अमाउंट ज्यादा में रखना है, यानी ऐसा सॉल्यूशन रहेगा कि थोड़ा मींस क्या हम लोग बोल सकते हैं, इट माइट बी कॉन्स्पिशियस गाइस, बट यू हैव टू मेक वन सॉल्यूशन दैट यू हैव टू ऐड सम अमाउंट ऑफ yeast in it, and you have to leave it for certain time, either you can leave it for 10 minutes, 1 hour over,
After that, whenever you will smell it, you will get a burning smell. Why we are getting here burning smell? Because of the respiration process here too takes place by the yeast, and they remove or carbon dioxide during their respiration process, and because of that, this whole solution is going to get transferred into finally our alcohol. एंड इतना गाइस ये सिंपल प्रोसेस आप लोग देखें कितना आसानी से वो कर लेते हैं, अल्कोहल बन जाता है। लेकिन आपको लग रहा हो ये एसिटिक एसिड एंड विनेगर क्या होता है? एक्चुअली आफ्टर बीइंग गेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल वी कैन टर्न इनटू ए प्योर एसिटिक एसिड। हाउ वी कैन टर्न? देयर वी यूज वन स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया व्हिच इज Acetobacter. One bacteria I'm going to tell you, Acetobacter, and because of this particular bacteria that we use during the formation of alcohol into it, there we have to just add the here suppose we got the solution of alcohol, then we have to add just Acetobacter bacteria over here, then finally we will get here that pure acetic acid. And you might be wondering what is this vinegar? Vinegar is nothing but it is a true, or we can say that it is a true concentrated acetic acid. I told you no, this is not correct, because a vinegar is not concentrated, it is diluted. Yeah guys, I told you there are two things that we have to always remember whenever we are studying, even in class 9 8 कुछ में पढ़ो, या बस दो चीज याद रखना कि एक होता है सॉल्यूशन में, एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड, एक होता है डाइल्यूटेड। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या होता है कि वहां पे हमेशा सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा रहेगा कंपेयर टू सॉल्वेंट, and that particular solution is known as concentrated solution. Better as in another term, when we are going to see about diluted solution, there the amount of solvent is more as compared to solid guys. So I told you about vinegar. Vinegar is a true diluted acetic acid guys. Now we are going to see how we can say more by using more examples how microorganisms are useful for us. So chalo guys, certain more examples that we are going to see. One topic I left over here guys, let me tell you that about it only. As I told you, the process of converting the pure solution into alcohol is having one special name. You might be knowing this term. Yes guys, I am telling you all. You might heard about one scientist, Louis Pasteur. आपको याद है pasteurization method? One of the best experiment that he did in his lifespan was his pasteurization method. Even fermentation method or fermentation process was also given by Louis Pasteur in 1857. It is the type of process during the formation of alcohol. The process of converting pure solution into alcohol is known as fermentation guys. So आपको बस ये याद रखना. Now we are going to see certain more essential needs of microorganisms guys. So let's start. So guys, we are going to see the next essentiality or next thing through which we can say that microorganisms are useful for us. So next use is that during the formation of medicine, how they help in the formation of medicine. Actually guys, the medicines made from microorganisms are having one another name which is known as antibiotic. This term antibiotic is totally related with anti means what do you mean by anti? आप लोगों ने ये वर्ड बहुत बार सुना है anti. बायोटिक का मतलब समझ में आ रहा है, the thing which is made from living creatures are known as biotic. एंटी का मतलब क्या होता है? देखो एंटी का मतलब हर बार अलग अलग होता है। आपने सुना होगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी डायरेक्शन, एंटी टेररिज्म, ये सभी वर्ड हम लोगों ने काफी बार सुना। एंटी का मतलब क्या होता है ना, बहुत बार उसके रिस्पेक्ट में या उसके अगेंस्ट चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि the medicines which are made from microorganisms are known as medicines or antibiotics. तो चलो guys देखते हैं certain antibiotics that we all are using in our homes. चलो पहला आपने सुना है erythromycin, next one penicillin, streptomycin. So guys, there are so many medicines that we are using which comes under antibiotics. Actually, antibiotic medicines are used in only that purpose, or we can say when we use antibiotic medicines. Antibiotic medicines को use करने से पहले हमें तो डॉक्टर का कंसल्टेशन चाहिए कंसल्टेशन. And even one major thing is that suppose we are having or we are suffering from an internal disease or internal something, and during that time we use the medicines, or during that time only we use this antibiotic medicines guys. So the next thing is like this,
So I am going to tell you about even one of things. Suppose that we are going to see about penicillin in detail. Actually, penicillin was discovered by, you already knew, Alexander Fleming. Alexander Fleming was the so famous for his penicillin discovery guys. तो चलो जानते हैं पेनिसिलिन का डिस्कवरी कैसे हुआ. एक्चुअली गाइस पेनिसिलिन जो हमारा एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है ना, उसका फॉर्मेशन एक फंगस जो कि पेनिसिलियम था उससे हुआ था. एक्चुअली पेनिसिलियम का उन्होंने एक अपने घर पे बहुत सारे टेस्टिंग किया था एंड फाइनली आफ्टर गेटिंग टेस्टेड फॉर सो मेनी ड्रग्स he transplanted so many penicillium fungus in his home, and during that time he started researching on penicillin, and finally he got one medicine antibiotic which is penicillin. Penicillin, don't get confused whether penicillium or penicillin is antibiotic. Penicillium is the fungus, whereas penicillin is our resultant antibiotic medicine guys. So now we are going to see about the uses, how we can use antibiotic medicine. I told you guys before taking in any antibiotic medicine we have to consult with the doctor. Next thing guys that we are going to see about vaccine. What is vaccine? Actually vaccine का नाम तो आप लोगों ने during the corona time we all are knowing about this, but guys before that let me tell you one two major things. Most of the students get confused when they get two terms. What do you mean by discovery and invention? बताओ, कमेंट करो. What is the basic difference between discovery and invention? आप लोगों ने ये दो टर्म तो हमेशा सुना है. Microscope was invented by Louis Robert Hooke in 1665. Pasteurization was discovered by Louis Pasteur in 1857. What is the basic differences between these two terms? Invention, discovery. मैं आपको बताता हूँ. Actually, during the discovery, something which is already hidden, that is only removed or that only comes out in the views of proper people. But during the time of invention, new things or new products comes out from certain different results. And guys, तो हमेशा ये याद रखना कि जब भी डिस्कवरी का बात होगा तो वहाँ पे बहुत चीज पहले से अवेलेबल है. जैसे अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कहीं ना कहीं ओ लिखा हुआ है तो आपको दिख नहीं रहा, लेकिन मैं बता दूंगा ये चलो यहाँ पे वो है, यहाँ पे वो है. ये मेरा डिस्कवरी था, एग्जाम्पल मैं दूँ. लेकिन अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जेड लिखा हुआ तो आप लोग कहोगे जेड तो कहीं दिख नहीं रहा, कहाँ से जेड है. और यही जो होता है ना, यही हमारा डिस्कवरी के छोड़कर क्या होता है, इन्वेंशन होता है. यानी जो चीज हमें दिखाई नहीं दे रहा, जो चीज अवेलेबल नहीं है, लेकिन कोई नया रिजल्टेंट वैल्यू बन रहा है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेंशन बोलते हैं. So guys, we are going to see about how they are helpful in the formation of vaccine guys. What do you know what do you mean by vaccine? A vaccine is a type of medicine which we use for boosting our immune system. Yeah guys, when we use vaccine we do nothing but we increase our strength to fight from any disease. That is only the thing regarding to vaccine guys. तो चलो स्टार्ट करते हैं वैक्सीन के बारे में. तो आप लोगों ने सुना है कोरोना के टाइम में वी आर यूजिंग वैक्सीन. So you might be getting clarity that whenever we use vaccine when we have to fight through viruses. तो चलो भाई एक तो पता है कि वायरस के साथ फाइट करना था. एंड इवन वैक्सीन टर्म वाज आल्सो डिस्कवर्ड बाय सर्टेन साइंटिस्ट. सो लिव इट गाइस, जो कि हमें नहीं पढ़ना, लेकिन जो हमें पढ़ना है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं गाइस. तो नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू सी अबाउट वैक्सीन. चलो भाई वैक्सीन के बारे में क्या कि देयर आर सो मेनी वैक्सीन दैट द चिल्ड्रन आर गेटिंग इवन फ्रॉम देयर स्मॉल चाइल्डहुड. आप लोगों ने सुना पल्स पोलियो प्रोग्राम. All the students, all the children are getting polio vaccine even from a small childhood onward. Why? In order to prevent the disease caused by the virus available during the time of or by the infection, or we can say that why the उनके कॉन्टैक्ट में आने से जो कि हमारा हो जाता है. कौन सा डिजीज होता है आपको पता है? जब किसी को पोलियो हो जाता है, स्मॉल चाइल्डहुड से ही बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाती है, और वही होता है, यही कारण होता है कि उन्हें प्रिवेंट किया जाता है, उनका इम्यून सिस्टम को बूस्ट किया जाता है. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट मेजर थिंग दैट सर्टेन डिजीजेस व्हिच हैज बीन प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन. आप लोगों ने सुना है टीबी अपना कोरोना ही ले लो, कोरोना कोविड-19 polio, rabies. There are so many examples guys. So these all diseases can be treated by using vaccine only. So guys, we are not going to waste our time. Even one major thing you might be knowing about smallpox, Edward Jenner. Edward Jenner discovered the vaccine for smallpox. Leave it guys. जो कि very बहुत famous है, क्योंकि most of the scientists are just discovery. They are
taking out the terms from the hidden term, not they are inventing that. The last thing that we have to study how microorganisms are useful in this increasing the soil fertility. Soil fertility for increasing or for what can I say guys कि हमें soil को fertile करने के लिए भी microorganism काफी यूजफुल होते हैं. कैसे? चलो मैं आपको बताता हूँ. You whenever you will go through one chain, you will get nitrogen cycle. Nitrogen cycle. Do you know what is this nitrogen cycle? Nitrogen cycle is nothing but this through this cycle, the nitrogen which is available, we already know that about 20% approximate. About average I'm telling you 70% of the atmosphere contains nitrogen. ये हमारा बेसिक नीड है, हम लोग जानते हैं इस बारे में. लेकिन एक चीज मानो कि कैसे हम लोग का सोइल के लिए नाइट्रोजन काफी यूजफुल है. आप लोगों ने सुना है क्लास 9 में यू विल स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन फॉस्फेट, नाइट्रोजन सो में पोटेशियम फॉस्फेट, ये सभी जब कंपाउंड जब बनाए जाते हैं तो उनमें हमेशा नाइट्रोजन, आप लोग पढ़ेंगे एनपीके के बारे में. एनपीके नाइट्रोजन पोटेशियम एंड नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ये तीनों जो होते हैं काफी एसेंशियल होते हैं सॉइल के लिए. तो ये जो नाइट्रोजन साइकिल होता है ये नथिंग होता है बट इट इज ए प्रोसेस. जैसे आप लोग वाटर साइकिल पढ़ा है वैसे ही ये भी होता है. नाइट्रोजन साइकिल इज ए साइकिल थ्रू व्हिच द कंपाउंड और द गैस ऑफ नाइट्रोजन व्हिच इज अवेलेबल इन आवर सराउंडिंग और एटमॉस्फेयर गेट ट्रांसफर्ड इनटू नाइट्रोजन व्हाट नाइट्रोजन कंपाउंड व्हिच गेट डिसॉल्व इन आवर सॉइल. ये एक्चुअली किसके थ्रू होता है? यहाँ पे एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, रिजोबियम एंड ड्यू बिकॉज ऑफ दिस रिजोबियम बैक्टीरिया ही ये फुलफिल होता है. ये एक्चुअली किस बिलोंगिंग से करता है आपका होता है. वी हैव टू फाइंड दी ये एक्चुअली ये होता है हमारा क्या होता है बताओ. रिजोबियम जो है वह जो है आपको मैंने पहले बताया कि जितने भी माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका एक अपना अपना क्लासिफिकेशन होता है या उनका एक अपना अपना किंगडम होता है. तो माइक्रोऑर्गेनिज्म जो कि हमारा रिजोबियम है वह हमारा बैक्टीरिया तो है ही है, लेकिन ये जो एक चीज और मैं बताता हूँ गाइस, ये जो रिजोबियम बैक्टीरिया होता है ना, इसके साथ साथ हमारे कई और बैक्टीरिया होते हैं या कई और हमारे लिए माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि इस नाइट्रोजन साइकिल या नाइट्रोजन को वापस लाने में मदद करते हैं. एक होता है हमारा ग्रीन ब्लू algae. ये देखो ये जितने भी एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ इसकी डिटेल आपको क्लास 9 में पढ़ने को मिलेगा. बस आपको अभी मेन के बारे में जानना है. तो व्हाट इज नाइट्रोजन साइकिल क्लियर हो गया. नाइट्रोजन साइकिल कैसे एसेंशियल. हम लोग जानेंगे कि ये जो देखो सपोज मैं आपको दिखाता हूँ ये हमारा सोइल है. जितना समझ लो फिर हमारा ये टॉपिक जो है फिर हम जाएंगे अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट व्हिच वी गेट फ्रॉम माइक्रोऑर्गेनिज्म. तो सपोज दैट दिस इज आवर सोइल का अपना होता है. यहाँ पे सपोज करो कि ये हमारा इतने छोटे छोटे राइजोबियम बैक्टीरिया इनके पोर्स में अवेलेबल होते हैं और ये भी हमारे तरह क्या करते हैं ब्रीथ करते हैं. तो जब ये ब्रीथ करते हैं तो हमारी तरह ये भी ऑक्सीजन को इंसाइड लेते हैं यानी एयर को लेते हैं इंसाइड. और इनके पास एक स्पेशल करने की क्या होता है कैपेबिलिटी. ये क्या करते हैं कि ये जो नाइट्रोजन को लिया ना इन्होंने ये इसे छोड़ देते हैं. और सोइल हम लोग जानते हैं ये पोरस होता है, हाईली पोरस होता है. यहाँ पर से नाइट्रोजन फाइनली गेट मिक्स्ड विद द सोइल प्रोपर्ली and because of that the plants which are available in the surrounding of rhizobium bacteria. सर rhizobium bacteria हर सोइल में अवेलेबल रहता है, हर सोइल के सरफेस के ऊपर अवेलेबल रहता है और ये प्लांट्स के जेमिनेशन में या प्लांट्स के हमारे ग्रोथ में एसेंशियल होते हैं और उन्हें फाइनली हमारा जो एसेंशियल प्रोडक्ट चाहिए उन्हें जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो प्रोवाइड करा जाता है नाइट्रोजन. एक चीज और गाइस आप लोगों ने सुना होगा कि about the formation of humus, how humus is formed. Actually because of the microorganisms only humus which is very useful, which is very organic compound is formed through the microorganisms only guys. तो इतना टॉपिक तो हम क्लियर हुए कि हमारे लिए माइक्रोऑर्गेनिज्म काफी जरूरी है. अब जानेंगे कि माइक्रोऑर्गेनिज्म जरूरी क्यों नहीं या हमारे लिए हार्मफुल कैसे. तो गाइस द लास्ट और वी कैन से द इंटरमिशन ऑफ दिस पार्टिकुलर वीडियो इज दैट हाउ वी कैन से दैट माइक्रोऑर्गेनिज्म्स आर हार्मफुल फॉर अस. सो गाइस वी आर गोइंग टू सी द थिंग्स व्हिच मेक्स माइक्रोऑर्गेनिज्म्स हार्मफुल फॉर अस. तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं इसे. सो फर्स्ट वी विल सी those microorganisms which makes a person ill or which what we can say those microorganisms which help in making a person ill is known as pathogen. याद गाइस हमेशा याद रखना pathogen is a type of microorganism which makes a person ill. ठीक है गाइस. तो हमेशा याद रखना कि डिजीज को फैलाने में जो कि हमारा माइक्रोऑर्गेनिज्म हेल्पफुल रहता है एसेंशियल रहता है उसे हम लोग पैथोजेन बोलते हैं. ठीक है. अब देखो पैथोजेन बहुत सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं. मैंने पहले बताया कि सर्टेन माइक्रोऑर्गेनिज्म्स यूज डिफरेंट मोड्स फॉर ट्रांसफरिंग द डिजीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर.
और वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। जैसे आपको पता है कि हमारा बहुत सारे जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे ऑल डोंट यूज द सेम mode for transferring the disease from one place to another. You all are knowing that during the time of COVID-19, we were wearing masks. Why? In order to prevent the virus from entering our lungs, because whenever they got entered in our lungs one time, actually viruses are dead until they got any host, because जब तक कि उन्हें कोई होस्ट नहीं मिलता वो मरे होते हैं। अगर उनको कोई होस्ट मिल जाता है तो फाइनली हमारे एक भले बोले आदमी की तरफ बात करने लगते हैं। यानी वो उनका एक बहुत ही बड़ा कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि वो रेस्पायर भी नहीं करते, कुछ नहीं करते, बस क्या करते हैं, ब्रीड करते हैं। वो बहुत जल्दी से अपना परिवार फैलाते हैं, उन्हें डर रहता है कि कहीं ना कहीं हमारा परिवार मर न जाए। एक्चुअली ड्यूरिंग द COVID-19 व्हाट वी वर ड्यूरिंग बिकॉज ऑफ द कोविड वैक्सीन दैट वी वर टेकिंग, एक्चुअली फॉर इन बूस्टिंग आवर इम्यून सिस्टम, बिकॉज ऑफ हार्ड अगर हमारा पावर हमारे पास ज्यादा है तो हमारे पास कौन वायरस आएगा, हम तो उसे फटाफट मार के भगा देंगे। तो चलो हमको इसके बारे में जानते हैं। तो हमेशा याद रखना कि देयर आर सर्टेन डिजीज दिस कॉज व्हिच आर कॉज्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो चलो आप लोगों ने टीबी के बारे में सुना, तो हमारा COVID-19 भी आ गया। COVID-19, टीबी अपना, कोलेरा अपना, सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर गाइस। अब देखो ये सभी का मैंने बताया मोड ऑफ, जो हमारा एक तरह से दूसरे जगह फैलने का मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी वेरी डिफरेंट। चलो इसका टीबी का क्या आप लोगों ने देखा, टीबी का हमारा एयर सभी इसमें क्या था, बैक्टीरिया के कारण होता था। COVID-19 अपना वायरस था, इसमें एयर के कारण हुआ। तो सभी का अपना मोड अलग है और सभी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि एक तरह से दूसरे कैरियर का वर्क करते हैं वो भी डिफरेंट है। टीबी आप लोगों ने देखा, टीबी हो गया, कोलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, तो मेरे ठीक है, सभी अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट मोड की तरह एक तरह से दूसरे फैलते हैं। तो इतना ही गाइस हम लोग को पढ़ना है क्लास 8 के टॉपिक में। लेकिन एक चीज और, हम लोग क्या जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम लोग अपने फूड को बचाते हैं। ठीक है, कैसे बचाते हैं, आप लोगों ने सुना है कि वी ऐड oil on pickles in order to prevent the growth of microorganisms on our pickles. Even whenever we have to prevent our food particles, what we do, we add a pinch of salt on our food particles in order to prevent our food materials from getting affected by microorganisms, guys. So these all things that you have to learn regarding to microorganisms, only these all things that you have to see in class 8. And overall we can say that microorganisms are even useful for us and even harmful for us। क्योंकि ये जो चैन होता है हमेशा बैलेंस रहता है, ऐसा नहीं कि ये ज्यादा हमारे लिए खतरनाक हो गया तो ये डॉमिनेट नहीं। अब कोरोना के समय सब सोच रहे थे माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं क्यों, नहीं गाइस, ऐसा है कि हमारे लिए वो काफी एसेंशियल है, क्योंकि हमारे ह्यूमन लाइफ फूड लाइवलीहुड में हमारे लिए काफी वो यूजफुल होते हैं। तो गाइस, how is this particular video, please comment in the comment section। Even one thing I asked you during the first time only, during the intro time only, I asked you that question, you should reply in the comment box section. If you are interested to learn more topics, you go and subscribe subscribe this channel, press the bell icon, and don't forget to join the Telegram channel also. Thanks for watching this video. Have a nice day to all, and please comment me if you are having more doubts.